Dear students, in this module, we are going to talk about the relationship between the globalization and family. Because in the modern society, we are not living in isolation. We are living in collectivity. We are living in the global world. And by living in global world, we are somehow being influenced by the cultures of that globalized societies. So, how those globalized cultures are affecting the family institution of Pakistan is also very important to understand. So, indigenous family system has gone through numerous changes in the wake of globalization. The influence of media is quite manifest, as you can see that if you, for example, as an interesting comparison, if you ask your grandparents that how they were socialized as compared to your own socialization, so you will find a very drastic change, a very uh, maybe contradictory approach to understand the life or how you have been socialized. So, in the wake of fast transportation, means of communication, local culture of Pakistan is being influenced while interacting with the globalized world. So, here is the little glimpse of how this globalization has affected our own cultural values. As you can see, that we find the integration of economies due to the availability of internet economy, online system of purchasing, online shopping system. Even you can purchase anything from United States or maybe from China or from any world around any country around you. And then we find that the definitions of how we should treat ourselves or our people equally or unequally, these debates are also coming to our own homes, that either male and female are equal, their roles are equal, they should have the equal rights or not. These debates are also affecting the family institution. Then you see the McDonaldization. By McDonaldization means के आपके माशरे के ऊपर एक फास्ट फूड कल्चर का इफ़ेक्ट है, उस कल्चर के साथ साथ जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं उनका भी एक इफ़ेक्ट हो रहा है, और ये अल्टीमेटली आपकी फैमिली लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है. मिसाल के तौर पे पहले आपके पास चॉइसेस कम थी और घरों में खाना पकता था, अब चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, खाना जो है वो बाहर से भी पक सकता है. तो लिहाजा जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो शिफ्ट होती जा रही हैं घर से बाहर की तरफ. देन ट्रेड वर्सेस एड है, आउटसोर्सिंग है, डिफरेंट ब्रांड्स आना शुरू हो गए हैं, और उन ब्रांड्स की वजह से हमारी जो एक्सट्रावेगेंस है, फजूल खर्ची है, वो भी बढ़ गई है. वी बिकम मोर ब्रांड कॉन्शियस दैन द नीड कॉन्शियस. इससे मुराद ये है कि हम कतई नज़र इस बात की कि ये चीज़ हमारी ज़रूरत पूरी करे, हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि ये चीज़ किस ब्रांड की है, लिहाजा वो ब्रांडिंग की प्राइस जो है वो हम पे करते हैं. एंड बाय पेइंग दैट प्राइस वी बिकम अ लॉट मोर एक्सट्रावेगेंट दैन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट थिंग. सो देन वी हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, द पॉवर्टी एज वेल, जिसमें ये है कि जो मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस हैं वो कम से कम होते जा रहे हैं, अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, और गरीब जो है वो गरीब तर होता जा रहा है. तो अल्टीमेटली जो ये ग्लोबल इफ़ेक्ट्स हैं ये आपके फैमिली इंस्टीट्यूशन को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं. So if we define it formally, it refers to the process of international integration arising from the interchange of the worldviews, products, ideas, and other aspects of culture. So, if you see that closely, the globalization is a process that increases the worldwide exchange of national and cultural resources. So, you see that by definition, it means that it can go both ways. Like if Pakistanis are receiving something out of the global world,
they are also giving something to the outer world. Although it is not the case, because this exchange is also based on high inequality, because we are receiving much more as compared to that what we can offer to them. So interconnected world through the internet and information technology and transportation becomes the very prominent feature of globalization. So here is the pictorial reflection of how globalization works. You will see that you can take internet as an example, that how internet, like this, by the speed of light and even faster than that, provides you the information about what happens in United States, for example, and in a fraction of a second that information travels to you. So it has affected the family system, especially the extended family system. We are shifting more towards the nuclear family system. It is polygamous nature of relationships are also being affected. We are more going towards the monogamous relationships. Endogamous marriage patterns are also being affected, like the cousin marriages are being discouraged. पैट्रीलोकल रेजिडेंसेस से शिफ्ट होके नियोलोकल रेजिडेंसेस की तरफ आ रहे हैं, और पैट्रियार्कल सिस्टम के अंदर बड़ी तब्दीली जो है वो वेमेन राइट्स की वजह से आ रही है. फिर जो अर्ली मैरिजेस थी उनको डिस्करेज किया जा रहा है, और मैकेनिकल सॉलिडारिटी जो एमाइल डरखाइम की अगर हम कॉन्सेप्ट में बात करें तो मैकेनिकल से हम ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. सो एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम जो है वो ख़त्म हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में रिप्लेस हो रहा है, और इसी तरह से मोनोगैमी से जो है वो मोनोगैमी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और एंडोगैमस रिलेशनशिप की तरफ हम जा रहे हैं. नियोलोकल रेजिडेंशियल पैटर्न्स हैं एज़ कम्पेयर टू द पैट्रीलोकल, and family is growing more egalitarian in nature, and concept of early marriage is being condemned widely throughout the country, and organic solidarity is being observed instead of mechanical solidarity.